Assalamu alaikum, dear fellows. I am Nurul Huda from First Aid Green. I am presenting you the treatment of cardiovascular disorders as an assignment given by our biology teacher, Miss Ladev. So, as we know that the heart, blood, and blood vessels are interconnected. So, before that, we have read in detail about the circulation and other related organ to circulation in our body. The main topic is heart. With regard to heart, we have got all the detailed information from the process of circulation in heart and various cardiovascular diseases including cyanosis, hypertension, etc. Now we know that these diseases can be cured. So we have many major and minor methods of different surgeries and operation to treat these diseases. Moreover, we just have to provide relief to our patient. So including all these minor and major methods, we have more reliable and modern methods including angiography, angioplasty, coronary bypass, and open heart surgery. So, moving forward, our very first method to treat the cardiovascular disorders is angiography. Angiography, meaning of angiography is that the angio mean vessels and graphy mean to see on graph. And the definition of angiography is that a procedure that uses X-ray contrast to look at the blood vessels. सिंपल मीनिंग में मैं बता देती हूँ कि इस प्रोसेस में जो फिजिशियन है और जो डॉक्टर है वो आपकी वेसल्स आपकी मुराद पेशेंट की वेसल्स में डाई यानी कि कलर इंसर्ट करता है और फिर जब वो कलर इतनी टाइम इंसर्ट करके एक्सरे इमेजिंग की जाती है उस इमेजिंग में हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की कॉर्नरी आर्टरी में कहाँ पे ब्लॉकेज है मतलब लोकेशन पता चल जाती है और फिर उस लोकेशन उस इमेज के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता है ये प्रोसेस जैसे प्रोसीड होता है मैं आगे एक वीडियो डाल देती हूँ वहाँ पे आपको इजीली समझ आ जाएगा. Girls always remember that angiography take place in such kind of rooms having fluorescent scope and X-ray machines. As you all know that coronary angiography is an X-ray examination of vessels and the chambers of heart, often done to identify any narrow or blocked coronary artery. This study can also be helped to measure the size and the function of chamber of hearts and heart valves. Most coronary angiography lasts between 1 to 2 hours a bit before the operation. The patient will be placed on the table with an equipped of fluorescent scope and X-ray imaging device. During the procedure, a fluorescent scope will move around the patient's chest in all the direction to record pictures of heart and coronary arteries from multiple angles. Angiography take place from the femoral artery. The doctor numbs the skin and insert the needle in the femoral artery. Once the needle is placed, a wire is passed through the needle and gently guided to the interior system to our heart, or I mean patient's heart. A needle will be withdrawn and exchanged from a soft flexible tube called sheath. Then next, a soft and flexible catheter will also be catheter wire will be slipped over the wire and threaded up to the heart. The physician will watch the movement of catheter on fluorescent scope. Surgeon will inject just inside the arteries one at a time and inject a special dye. This dye allows the fluorescent scope to take the images so that any blockage will clearly identify as arteries are filled with dye. It may feel slightly nauseated when the dye is injected, but after sufficient images are taken by fluorescent scope of coronary artery and then these pictures are recorded and catheter will be removed. And here are some angiography pictures of hand, brain, and lower limbs. Geography is an old method, but nowadays we have some alternates method to angiography, including CT scan, MRI scan, nuclear scan, and ultrasound scans. And I'm showing you some picture of them. So our next method to treat cardiovascular disorder is angioplasty. As the name indicate, angio mean blood vessel and plasty mean formation. So I have some very simple definition that is surgical repair of a blood vessel. Uh,
ईज़ी मेथड में बता देती हूँ। एंजियोप्लास्टी में ना एक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो सिंपली उस कॉर्नरी आर्टरी को ओपन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टंट। या फिर स्टंट यूज़ होता है या फिर स्टंट के खाली एक बीच में वायर गाइडेड वायर डाल के उसको इन्फ्लेट किया जाता है और वो आर्टरी खुल जाती है। द प्रोसीजर इज़ डन ऑन ब्लड वेसल्स कॉल्ड coronary arteries. They supply your heart muscle with oxygen. The goal is to restore blood flow if a substance called plaque has significantly narrowed these vessels. To begin with the procedure, the doctor will numb your skin in your wrist and a needle will be placed to your skin into your radial artery. Next, a flexible wire will be passed through needle. Then the needle will be withdrawn. It will be exchanged with a small, thin, flexible tube called sheave. This permits access to your artery. Next, the guided wire will be passed up to your artery, and a flexible tube called catheter will be advanced over the wire in coronary artery. The progress of the procedure will be seen by the doctor with an X-ray device called fluoroscope. If a significant blockage is found, your doctor inserts a guide wire in the artery. A balloon on the tip of the catheter will be moved along the wire to the blockage. When the balloon inflates, it will expand the artery and improve the blood flow. You may feel pressure, but after that, the doctor will deflate it and remove the balloon. Next, a wire meshed tube called a stent may be passed in treated area. A stent helps the artery to remain open. Doctor will choose a proper side stent that can compress over the balloon. Now, the stent will be moved over the artery with the same guided wire. When the balloon is inflated, the stent will expand and locked in place. After the balloon catheter is come out, the stent will stay in the same place to hold the artery open. At the end of the process, the guided wire will be removed. So the next one is coronary bypass, and it is very close related to open heart surgery. Definition is a procedure that restore blood flow to your heart muscle by diverting the flow of blood around a section of a blockage artery in your heart. सिंपल ये है कि ओपन हार्ट सर्जरी तो नेक्स्ट है। कॉर्नरी बाईपास में ऐसे होता है कि आपकी जो कॉर्नरी आर्टरी है ब्लॉक्ड हो जाती है, उसमें ना एक दूसरी वीन को या आर्टरी को आई मीन ग्राफ्ट किया जाता है, यानी किसी और जगह से निकाल के उस जगह में फिक्स कर दिया जाता है। एडजस्ट ऐसे किया जाता है कि जो ब्लॉक्ड आर्टरी होती है वो रिमूव हो जाती है और यहाँ पे कहीं और से निकाली हुई आर्टरी को फिक्स कर देते हैं। मैं आपको इसकी साथ में वीडियो के थ्रू बताती हूँ। A coronary artery bypass graft or simple cabbage is performed to improve blood circulation to heart muscle in people with severe coronary artery diseases. In this procedure, a healthy artery or vein from another part of the body is connected or grafted to the blocked artery. The grafted artery or vein bypass the blocked portion of coronary artery carrying oxygenated blood to the heart muscle. One or maybe more a coronary artery may be grafted during a single procedure. And this video is for you to see how roller pump helps to control blood flow. सिंपली मैं बता देती हूँ कि ड्यूरिंग ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी हो या कॉर्नरी बाईपास हो, इसमें हार्ट के अंदर जो ब्लड पंप हो रहा होता है उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है। ये हमारे नेक्स्ट पेज पे पेज 30 पे एक इन्फॉर्मेशन में भी लिखा हुआ है कि बहुत नेसेसरी होता है हमारे हार्ट को खाली होना फॉर बेटर ऑपरेशन और सर्जरी। तो इसी तरह एक पंप लगाया जाता है हमारे हार्ट के साथ। वो पंप मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ में हार्ट के साथ कनेक्टेड भी दिखा देती हूँ। और वो वर्क कैसे करता है कि जो सिंपल आर्टरी हमारी अरोटा होता है जो ऊपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आ रहा होता है, एक पंप वहाँ पे अटैच किया जाता है, कैनुला अटैच किया जाता है और उस कैनुला को एक पंप के साथ अटैच किया जाता है। फिर एक
कैनुला हार्ट से नीचे जो पूरी बॉडी में लेके जा रहा होता है, वेंट्रिकल के साथ जो अटैच होता है, वहाँ पे अटैच किया जाता है। अब वो दोनों कैनुला में से जो ब्लड पास आउट हो रहा होता है, वो हार्ट में जाने की बजाय पंप में जाता है। ये प्रोसीजर होता कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और ये पंप जो है ह्यूमन हार्ट के साथ तकरीबन 3 to 6 आवर्स तक मुसलसल काम कर सकता है। जब तक ऑपरेशन प्रोसीड रहता है तब तक ये पंप भी साथ में लगा रहता है। And the fourth method to treat cardiovascular disorders is open heart surgery. Open heart surgery is closely related to coronary bypass. Open heart surgery is the fourth method to treat cardiovascular disorder. In this procedure, the doctor will cut your skin and then the next is sternum. Your chest bone will be dissected into two halves. Next, the heart will be attached to cardiopulmonary bypass pump or heart lung machine. This machine temporarily performs the function of your heart and lungs during surgery. This allows your heart to be stopped while surgeon put the graft in their place. One or two blood vessels is typically used as graft. These are inner thoracic arteries in chest or saphenous vein in leg, saphenous vein. For internal thoracic artery graft, your surgeon leave the upper end attached to a subclavian artery, and for the lower end to coronary artery just beyond the blockage. And for same as for saphenous vein, graft in your surgeon will switch one end to aorta and another end to the narrowed artery just beyond the blocked artery, just as shown you in the video. Then the surgeon will use electric signal to restart your heartbeat. Also, once your heart again beating normally, the heart lung machine will be disconnected. Your surgeon will wire up your breastbone and back to its place and switch your skin close. एज आई टोल्ड यू बिफोर, ओपन हार्ट सर्जरी किस तरह की जाती है वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये वीडियो दोबारा मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढी है जस्ट इसके लिए, क्योंकि जिस तरह की डायग्राम हमारी बुक में एक्सप्लेन हुई है जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए। री ट्रैकर जो चेस्ट में कैसे लगता है वो और चेस्ट को ओपन कैसे किया जाता है वो सब इस वीडियो में है। फर्दरमोर एक स्टेटमेंट हमारी बुक नंबर पेज 330 के एंड में लिखी हुई ओपन हार्ट सर्जरी के। The definition of open heart surgery has become confusing with new procedure being performed on the heart through a small incision. There are some new surgical procedure being performed that are done with the heart still beating and is generally termed as beating heart surgery. इस तरह भी होता है। हमारे पास दो अदर प्रोसेस हैं कैबिज के लिए। कैबिज का मतलब होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। इसके दो और भी प्रोसेस हैं, वो दोनों मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑफ पम्प सर्जरी और मिनिमल इन्वेसिव बाईपास सर्जरी। इसमें ऑफ पम्प सर्जरी में जो बाईपास पंप होता है जिसको हम लोगों ने कार्डियो पल्मोनरी पास भी कहा था, पंप पास भी कहा था, वो ऑफ होता है। ये दो मेथड है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। Off pump surgery is also called beating heart bypass grafting because heart isn't stopped and heart lung machine isn't used. Instead, a mechanical device is used to study the part of heart where grafting is being done. The second method that is minimally invasive bypass surgery, in which doctor will use a special designed instrument by inserting a small incision in chest. Such procedures sometimes require heart lung machines as well. So yeah, this is the end of my presentation। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन मैं आपकी क्लियर कर दूंगी, और अगर मैं ना कर सकी तो ऑफ कोर्स हमारी जीनियस मिस लारियम ज़रूर कर देंगी। थैंक यू वेरी मच।